Hello everybody, in this video we'll start a new chapter that is solid, liquid and gases, and in this chapter में हम लोग discuss करेंगे about matter, atoms and molecules, solid, liquid and gases, physical and chemical changes. Okay, so we'll start from matter. What is matter? तो matter क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं, right? We know that the water exists in three forms. पानी तीन form में होते हैं, solid, liquid और gas. Solid में ice, liquid में water and gases में you can say vapor, right? So we know that. तो इसी के बेस पे हम लोग आगे के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे व्हेन विल रीड अबाउट solid, liquid and gases. That will really help. Okay, now moving to what is matter. So everything in the universe is made up of matter. So how can we define a matter? So a matter is basically the substance that has mass and occupies space. Okay, that is only called as matter. Matter can exist in three states. Matter तीन state में exist कर सकते हैं, solid, liquid और gas में. Matter जो है वो बना होता है दो important parts से, which is atoms and molecules. Okay, so atoms are what? Atoms is basically small kind of building block, you can say. जैसे building बना होता है ईंटे से, एक ईंटे से ही मतलब जुड़ जुड़ के फिर बाद में building बन जाता है, वैसे ही similar to that atoms are also the building block of matter. Atoms भी बहुत सारे छोटे छोटे atoms जो combine होते हैं, then they form a kind of matter. Okay, they are extremely very small, यानी कि जो atoms होते हैं वो बहुत ज़्यादा small होते हैं, हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते. इसीलिए एक बहुत ही powerful kind of microscope को invent किया गया है for case if you want to see about or search about atoms, you can use that powerful microscope. Okay, the water you drink, the air you breathe, the air and the earth and everything around you is actually made up of atoms. Okay, अब molecules क्या होता है? So when two or more atoms combine, they form a particle which is called as मॉलिक्यूल. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स टुगेदर कंबाइन होते हैं तो वो एक पार्टिकल को फॉर्म करते हैं विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल, एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स and it is written as O2, whereas a water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, also written as H2O. Atoms and molecules are in constant motion. वो हमेशा एक constant motion होते हैं, यानी कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं. एटम्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. इन सॉलिड्स अगर देखा जाए तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव बट रिमेन इन सेम पोजीशन. मूव तो करते हैं बट एक ही पोजीशन पे दिखते हैं हमेशा. अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो ये क्या होते हैं, दे ओनली वाइब्रेट विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन. बस वाइब्रेट करते हैं, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई यू कैन से दैट सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, इसी रीज़न की वजह से. एंड इन लिक्विड्स यू कैन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड ग्लाइड ओवर ईच अदर. दैट इज़ वाई लिक्विड फ्लो ईजिली एंड कैन बी पोर्ड इन टू कंटेनर्स. अगर गैसेस की बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो दैट इज़ वाई गैसेस मूव to take up the entire space available to them. Now intermolecular spaces. So intermolecular spaces, जो space होता है between molecules, 2 or more molecules, the spaces between them is called intermolecular spaces. If we'll discuss about some these solid, liquid and gases. So the molecules are held together by a force of attraction which is very strong in case of solid, weaker in case of liquids and very weak in case of gases. Clear? Now the lightness or heaviness of a substances for a given volume is called as density. Density depends on how closely the molecules are packed in a given substances. Thus a stone is denser than the block of wood because the particle in a stone are very closely packed if compared to the block of the wood. Now moving to the liquids, heating and cooling of liquids. When you heat, जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, अगर उसे मतलब बहुत ज़्यादा हीट किया जाए तो यू नो दैट अ लिक्विड विल चेंज इटसेल्फ इनटू गैसेस फॉर्म. एंड दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. यानी कि जिस प्रोसेस में एक लिक्विड अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं. एक डेली एग्जांपल के बेसिस पे ले सकते हैं इवेपोरेशन का एग्जांपल, दैट इज़ क्लोथ्स. हम लोग कपड़े सुखाते हैं, राइट? सो जब हम लोग भीगे कपड़े को टांग देते हैं सूखने के लिए, व्हेन वी हैंग इट वी सी वेट क्लोथ्स ड्राई अप, राइट? एंड द वाटर इन देम disappears. This is all because of the presence of the evaporation procedure.
एंड वेन इफ़ यू विल मीन्स वेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब एक लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं द मॉलिक्यूल स्लोज डाउन, एंड वेन द कूलिंग इज कंटिन्यूड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड रीअरेंज देमसेल्व्स टू बिकम अ सॉलिड, राइट. एंड दिस प्रोसेस इन विच जब लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इटसेल्फ इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. द रेट ऑफ फ्रीजिंग जो होता है इज डिफरेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स. ओके, नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड्स. जब एक सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट फास्टर. ऑन फर्दर हीटिंग the particles move around and gradually turns into liquid. Okay, and this process in which a solid changes itself into liquid is called melting. Okay, and not all substances undergo, सभी substances melting को undergo कर सकते हैं, but not in normal conditions. Okay, some solid substances may undergo certain other changes on heating. For example, if you take paper burns when it is heated. However, most solid expands on heating, right? All right. Now we'll discuss about gases, heating and cooling of gases. तो जब एक गैस को हीट किया जाता है, when a gas is heated, the molecules move faster, thereby causing it to expand. When a gas is cooled for a long time, the molecules slow down and gradually turn into liquid, right? And this process in which जो गैस होता है अपने आप को लिक्विड बना लेता है, that process is called as condensation. ये एक बोल सकते हैं कि वाटर का ग्लास है, एक ग्लास है, उसमें हम लोग आइस को रख देते हैं, आइस को नहीं, सॉरी, यू विल सी एक ठंडे पानी का ग्लास है, राइट. You can take that example, the formation of water droplets, right, on the outer surface of the cold glass is an example of such kind of condensation. Okay, when the water vapor present in the air comes in contact with cold surface of the glass, the movement of molecules in water vapor slows down, and hence water vapor, that is gas, turns itself into liquid. Okay, that is water. Formation of dew and mists are all examples. Both the examples are of condensation. Okay, now physical change and chemical change. Now I'll discuss about physical change and chemical change. So physical change क्या होता है? ऐसा change जो कि नए substance को form ना करे, उसे हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं. एंड डेफिनेशन कैन बी अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड एंड देयर इज मेरली अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, इससे क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिलेगा, बट एक ग्रेजुअल चेंज हो जाएगा, राइट, इन स्टेट. आइस को हम लोग मेल्ट करेंगे तो इसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, राइट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और ऑल आर दीज एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, इसे हम लोग वापस से रिवर्स कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से वी कैन गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग, राइट. बर्फ़ जो है उसे हम लोग गर्म करेंगे, so it will change into water. But if you keep it in your freezer and after some time you'll see that it becomes ice, right? So you can see this is called physical change. But chemical change is different from it. Chemical changes वो changes होता है जिसमें नए substances form होते हैं, वो irreversible होते हैं, यानी कि इसे हम लोग reverse नहीं कर सकते हैं. like एक change हो गया तो वो वापस से हम लोग नहीं back करा सकते, like that. And you can say example हम लोग देख सकते हैं burning of wax candle and burning of paper are both the examples of chemical change. If you want the definition of chemical change you can write, otherwise it is given also. So chemical change is one in which new substances is formed. This kind of change is irreversible, that is we cannot get the original substance back once it undergoes a chemical changes. So here is the end of our chapter. We have completely discussed this chapter. The difference between physical change and chemical change is given here. You can go through it. It is important. And thank you everyone for watching this video. We have completed the chapter named as solid, liquids and gases. If you have Collins book, you can see it's given in page number 122, chapter number 11. So I hope you have understood this properly. If you have any doubt, you can contact me through the comment section. You can take help from it. And thank you everyone for watching.